State Gauss's theorem. It states that total flux through a closed surface is always total flux through closed surface is always 1 upon epsilon 0 times charge enclosed by that surface. That is, flux equals to Q inside upon epsilon naught. But flux is also E bar dot ds bar over closed surface. So by Gauss's theorem we can use integral of E bar dot ds bar is Q inside upon epsilon naught. Write this much Gauss's theorem. Then using Gauss's theorem I am deriving expression for intensity for cylinder, for sphere, for conductor, for straight wire. Sir, you started just now, no, from Gauss theory. Who is saying this? Sir, Shifa. Actually, I logged in, but then I wasn't getting the sound. Sound was not audible. From who is saying Shifa? Sir, I'm Just audible. now. Just now I've started. That is what we started with earlier. So even I had some connection problem. No, you all say start 10 minutes connecting early. I send at 4:30 and you say this is the problem, that is the problem. This is not required because it is not only your batch we take lecture. Other batch student properly they log. Now say your senior people should log 10 minutes in advance. Sir, the sound is You start at 4:45. Then definitely it will take 5 minutes. When you open the computer, you start your computer, Zoom will accept, it will take time. So it will take 10 minutes. But when you start your work 10 minutes early, be ready. Moment you get ID and password, join. That will be easy. Sir, can you please share the screen? Wait 1 minute. Wait 1 minute. Wait. Ame, why you are late? Ame, why you are late? Samira, why you are late? And after saying you all don't answer, Samira, why you are late? Ame Wadekar, why you are late? Sorry, sir. See, still don't understand you are trying for medical entrance, that too in repeat batch, where your situation is do or die. So casual approach, how can you? Still, I really wonder. So casual approach, how you are taking, I don't understand. So neither you should be casual, not we should be casual. That is what repeat batch is. If I am taking casually, I am not fulfilling your dream properly. So I am doing injustice. When you are doing, you are also doing the same thing. State Gauss's theorem just now I did. It states that total flux passing through closed surface is always 1 upon epsilon 0 times charge enclosed by that surface. So flux is nothing but Q inside the closed surface upon epsilon naught. And flux is also E bar dot ds bar. Therefore, we can say E bar dot ds bar is Q inside upon epsilon naught. Just write till this, then using Gauss's theorem, we'll have derivation of intensity
near charged sphere, charged cylinder, charged conductor, thin plane sheet. इंडिविजुअल चार्जेस का वी हैव ऑलरेडी डन. पॉइंट चार्ज का हो गया, डाइपोल का हो गया, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का चलेगा. Once you complete, tell me so that I can start. Written full till end? Yes, sir. Okay, Done, sir. fine. Derive expression for electric field intensity at electric field intensity due to charged sphere. The inside, outside, on the surface, all will derive using Gauss's theorem. तीन केसेस आएगा, inside, outside and on the surface. Intensity at any point near charged sphere using Gauss's theorem. I said we'll be doing three cases, inside, outside as well as on the surface. See, when I say charged sphere, that means I am talking about three spheres: hollow, non-conducting, hollow, conducting and solid, conducting and solid conducting. इसका मतलब चार्ज अगर पुश किया तो डायरेक्टली सरफेस पे आ जाएगा, वो वाला केस है. So, we want expression for electric field due to charged sphere which can be hollow. hollow में दोनों चलेगा, नॉन कंडक्टिंग एंड hollow कंडक्टिंग. इसका मतलब ये अगर hollow है, इधर हमने अंदर चार्ज भरा, ये चार्ज पूरा सरफेस पे आ गया. और अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है तो भी चार्ज पूरा सरफेस पे आ जाएगा. तो इनडायरेक्टली वी आर टेकिंग चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ आइदर hollow sphere और hollow conducting और solid conducting, एक ही बात है. So first one, let point lies outside. मतलब distance of point R is greater than radius of the sphere on which charge is present. ओके, इतना लिख लो, फिर जगह क्लियर करके पूरा डेरिवेशन करता हूं. So the first one, it's let point lies outside. हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन है लेट पॉइंट लाइज आउटसाइड. Okay. उसका मतलब डिस्टेंस आर रेडियस से बड़ा है. आई मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको इसका मीनिंग क्या है. तो एक बार पॉइंट आउटसाइड है, फिर सरफेस पे आएगा, फिर अंदर आएगा ना, तीन पोजीशन होगा. पूरा हेडिंग लिख के हो गया तो मैं रब कर देता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एक बार ये खत्म हो गया तो फिर पोटेंशियल के बाद फटाफट जाता है गाड़ी. चलो, तो इमेजिन एक स्फीयर है. अगर स्फीयर है तो सेंटर होगा ना. हेलो, Yes, sir. रेडियस भी होगा. Yes, sir. तो Yes, कंसीडर sir. अ sphere with center or radius r to be charged uniformly with positive charge having surface charge density sigma. Let P be a point at a distance r. अभी देखो ये पॉइंट बाहर आ गया ना, तो r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा है क्या छोटा है? हेलो, बड़ा है. बड़ा है. बड़ा So है. let P be a point at distance r from center or outside. अभी मुझे यूज करना है गॉसेस थ्योरम. उसका मतलब चार्ज अंदर होना चाहिए. तो ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर. गॉसियन स्फीयर मतलब एक इमेजिनरी स्फीयर है with center O, radius small r. It will pass through point P or not? Tell me.
रेडियस आर लिया तो पॉइंट पी, Yes. ओके, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियस एंड नॉर्मल आर सेम, करेक्ट? Yes. Yes. नाउ बाय गॉसेस थ्योरम, flux phi is charge inside upon epsilon naught, which is same as E bar dot ds bar over closed surface. अब बता सकते हो चार्ज कितना है ये सरफेस बी में, बी के अंदर, सरफेस बी के अंदर कितना चार्ज है? ये सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा Sigma into इंटू A. 4 pi r square है ना, रीजन Yes. आप समझ गए ना, आप नहीं समझा तो पूछ लेना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इतना चार्ज इनसाइड है, इनसाइड चार्ज सिग्मा है, सिग्मा का मतलब है चार्ज अपॉन एरिया जिसके ऊपर चार्ज है, तो एरिया जिसके ऊपर चार्ज है उसका एरिया 4 pi r square, स्फीयर है इसलिए, तो चार्ज को मैं बोल सकता हूँ सिग्मा इंटू 4 pi r square। अब ये हो गया ई डी एस, एरिया वेक्टर भी यही डायरेक्शन में, तो ई डी एस कॉस जीरो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस सिग्मा इंटू 4 pi r square अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ई, पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा, ये पूरा डीएस 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 कितना एरिया हो जाएगा, बोल सकते हैं कितना एरिया हो जाएगा? 4 pi r square, ये पूरा अगर जाएगा तो ये सिग्मा सिग्मा डीएस 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 पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है? 4 pi r square, नॉट फॉलोड, Yes, sir. Yes. sigma into 4 pi r square upon epsilon naught is E into 4 pi r square. Please copy till this. एकदम सिंपल है, आपको तो लास्ट लाइन खाली चाहिए, लेकिन क्या प्रूफ अगर ध्यान में रहेगा तो whenever you are get held up you can refer and understand what you have to do. See, all of you please send your daily timetable so that any extra lecture we have to plan, we can plan in such a way that it doesn't clashes with your time. Your name and your lecture timing from Monday to Sunday, please write down and send afterwards, after the lecture. Shall I rub this now? Yes. The 1 minute. Okay, okay, okay. See, to score, theory must be strong first and then application. Done, sir. Okay. So we got answer as E into 4 pi r square equal to sigma into 4 pi capital R square epsilon naught. ये 4 pi I can cancel, so E is sigma capital R square upon epsilon 0 small r square. That means E is inversely proportional to R square. So
Sometimes they can ask intensity at any point near charge sphere is inversely proportional to what? 1 upon r square. Or since E is sigma into capital R square upon epsilon 0 r square, sigma is nothing but charge upon area 4 pi r square into r square epsilon naught r square. This r square I can cancel. So indirectly it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. मतलब intensity at any point near charge sphere is same as intensity at distance r from point charge. क्योंकि स्फीयर को अगर दूर से देखते हैं ना हम तो पॉइंट दिखेगा, तो स्फीयर का जो इंटेंसिटी है पॉइंट चार्ज के इंटेंसिटी के जैसा हो गया. नाउ कॉपी फर्दर. आप इस फॉर्मूला में फॉर्म में याद कर सकते चलेगा, ये फॉर्म में याद किया तो भी चलेगा. सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर. हो गया. Yes, sir. Everybody has done. Can I clear it off? So we Yes, got sir. intensity at any point near charge sphere as 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square or sigma capital R square epsilon 0 r square. Now, if point is case 2, r is equal to capital R. That means point lies on the surface. Therefore, E is epsilon capital R square, sigma capital R square into small r square will become sigma r square upon epsilon naught capital R square cancel. So E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q by capital R square. So small r becomes capital R for intensity at any point on the surface. Case 3. Point lies inside. That means R is less than capital R. So if this is A of radius capital R, Gaussian sphere is inside of radius small r. What is charge enclosed by Gaussian sphere now? 0, na? 0. Charge enclosed by Gaussian sphere equals to 0 because sphere अंदर चला गया, 0. So E will become 0 because E is nothing but 1 upon 4 pi epsilon charge enclosed. So it is 0. So can I say intensity at any point inside the charge sphere is always 0. Okay? Hello? Intensity Yes. at any point inside charged sphere is always 0. Inside charge sphere is equals to 0. तीन फॉर्मूला मिला, एक आउटसाइड, दूसरा सरफेस पे, तीसरा इनसाइड स्फीयर. नाउ कॉपी फुल.
Done, sir. चलो सबका हो गया इतना. Yes. Fine. So if the sphere is charged and it is hollow sphere, conducting or not conducting, or if it is solid sphere which is conducting, then we got E ka three formula. One is outside 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. On the surface 1 upon 4 pi epsilon naught q by capital R square. Inside 0. मैंने ऐसा याद रखा है तीनों फॉर्मूला. अभी नेक्स्ट वाला, if the point is anywhere inside, outside and on the surface of non-conducting sphere. पहले इसका ग्राफ देख लेते क्या आएगा. ग्राफ ऑफ E versus distance. In all the cases we got intensity was proportional to 1 by r square. तो ये E और ये distance R for conducting sphere we have taken. Sir, in test also you gave a graph. A test also graph can come. You had given. So you were not able to solve. No. Now once this theory gets over, I think it will become clear. See, this is R here, distance from center 0. So till I move R equal to radius, what will be intensity? 0, 0, 0, 0. बराबर ना? Moment it becomes R equal to R, then intensity will be 1 upon 4 pi epsilon naught q by capital R square. Followed? Yes. और उसके बाद वो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा. सो दिस द ग्राफ. इधर तक कुछ नहीं आएगा, इंटेंसिटी 0 है ये. इधर से चालू होगा फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर ग्राफ ऐसा बना दिया आपने तो रॉन्ग है. ग्राफ ऐसा बना दिया तो भी रॉन्ग है. ग्राफ हमारा ऐसा आना चाहिए. डॉटेड मतलब है डिस्टेंसेस. कुछ डाउट? हेलो, No. प्लीज कॉपी द ग्राफ देन. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. डन. Yes, sir. Next one is electric field due to solid non-conducting sphere और filled with dielectric भी बोल सकते हैं. नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर और इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोल सकते हो. अभी देखो, मान लीजिए एक पिचकारी है, सिरिंज, जिसके अंदर चार्ज भरा है. अगर वो चार्ज को मैं अंदर पुश करूं, कंडक्टिंग है तो पूरा सरफेस पे आ जाएगा ना, और नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो स्फीयर के अंदर ही रहेगा ऐसा. सो फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज इज ऑलवेज इनसाइड, नॉट ऑन द सरफेस. कंडक्टिंग रहेगा तो ऑन द सरफेस. So I want again intensity at any point outside, inside and on the surface of non-conducting sphere. That means charge is inside. So let rho be charge per unit volume
of sphere of radius capital R. So rho is charge upon volume 4 by 3 pi r cube. I hope you followed this much. This much you all have followed? Yes, sir. Yes, Okay, just copy this. Not followed, simple है ना, क्या इसमें? चार्ज इनसाइड है, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये, तो रो लिखा मैंने क्यू अपॉन, अभी तक ई निकाला नहीं, तो इधर से मिल जाएगा चार्ज इस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, so charge inside this sphere is rho into 4/3 pi r. ये 12th में नहीं था आपको, लेकिन एंट्रेंस में है. अब चार्ज आ गया, अब एक एक करके मैं इंटेंसिटी निकालता हूं. चलो क्लियर कर दूं सब. Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. और सो फार ओनली वी हैव डन कि चार्ज कितना होगा अंदर. नाउ केस 1, R is greater than R, मतलब पॉइंट आउटसाइड है क्या इनसाइड? Outside. Outside, yes, point is outside. So this is my that sphere which has got charge inside. P is a point outside at a distance R from center. Draw a Gaussian sphere. So intensity will be directed outward. Small elemental area is also normally outward. So by Gauss's theorem, flux is charge inside upon epsilon naught, which is E bar dot ds bar का integration. Charge inside is rho into 4/3 pi r cube upon epsilon naught. E ds into cos of 0 over closed surface. Closed surface will be, this is nothing but E into 4 pi small r square. 4 pi cancel from both sides. Therefore, we get E equals to, this is E equals to rho into capital R cube upon 3 times epsilon naught small r square. So point is inside, we are getting rho into 4/3 rho r cube upon 3 epsilon 0 r square. Copy this much. अभी इसको मैं प्रूव करता हूँ Sir, सेम. हाँ, क्या हो गया sir, बोलो. can you explain once? Sir, आप एक बार लोग और explain करेंगे. आप Sir, मैं डिस्कनेक्ट हो जाते. disconnect हो गई थी. अरे आप लोग ऐसे जब करते रहोगे तो हाँ, पोर्शन अगले साल अपना होगा. थोड़ा वाईफाई स्ट्रांग ले लो. नहीं sir. हाँ sir, अचानक हो गया. देखो फिर से, charge is inside the closed sphere. So let point be outside. That means distance is greater than capital R. So draw a Gaussian sphere with radius small r, center O. It will pass through point P जो कि outside है. फिर मैंने बोला by Gaussian theorem. For flux का formula charge inside upon epsilon naught, which is nothing but E bar dot ds bar. Charge inside क्या है? Rho into volume 4/3 pi r cube. क्योंकि charge ये पूरे volume में है आपकी बार. Upon epsilon naught. E ds cos 0 because ds and E are in same direction. So E into 4 pi r square is area.
तो सॉल्व करके ये 4 4 कैंसिल हुआ, पाई पाई कैंसिल हुआ, ई आ गया रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। सो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हम लोग सब अब नॉन कंडक्टिंग का कर रहे हैं, कंडक्टिंग का हो गया, ये आ गया आंसर। नॉन कंडक्टिंग वाला 12th में नहीं था आपको, पर एनसीईआरटी में है। इधर तक कॉपी करो। अभी भी डाउट है? नो सर। कर लो यहाँ पर। जैसे एक बार पूरा एक्सप्लेन हो गया तो पूरा मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला एक साथ दे दूंगा, तो आपको उतना बाहर ऐड कर लेना है। तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पता है ना? ये एक सरफेस पे होता है, एक पॉइंट पे होता है, और एक पूरे अंदर वॉल्यूम में होता है। तो एक को लीनियर चार्ज बोलते हैं, एक को सरफेस चार्ज बोलते हैं, एक को वॉल्यूम चार्ज बोलते हैं। Once you are done, please tell me so that I will clear, and another two we have to do. डन सर। ठीक। Done, sir. अब यही फॉर्मूला मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ कि सेम आएगा जो हमको कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मिला, यही वाला। E इज रो। रो का क्या मतलब है, याद है आपको? व्हाट इज रो? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो रो के जगह पे ये Q अपॉन 4/3 पाई आर, कैन आई राइट? एक ही बात है ना, ये है ना? कैन आई राइट? ये रो, हाँ, रो की जगह पे मैंने क्या लिखा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम इनटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। देखते हैं वही फॉर्मूला आ रहा है क्या? आर क्यूब कैंसल, 3 3 कैंसल, मुझे तो वही दिखा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना? तो वेदर इट इज कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग, आउटसाइड का फॉर्मूला सेम टू सेम रहता है। केस 2 ऑन सरफेस पे भी सेम रहेगा। ऑन सरफेस स्मॉल r becomes capital R, इतने ही चेंज है। तो E will become 1 upon 4 pi epsilon Q by capital R square। केस 3 ये काफी इंपॉर्टेंट है। What was intensity at any point inside charge sphere? Zero. Zero. जीरो। जीरो। जीरो, वेरी गुड। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के लिए जीरो नहीं होगा। Here R is less than R। सी सरफेस का फॉर्मूला, आउटसाइड का फॉर्मूला सेम टू सेम, लेकिन इनसाइड का फॉर्मूला अलग। इनसाइड इंटेंसिटी वाज जीरो इफ चार्ज इज ऑन दिस सरफेस, लेकिन अब तो चार्ज अंदर है। तो ये स्फीयर लिया मैंने ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इसके अंदर ये गॉसियन स्फीयर आया ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो इसके अंदर तो चार्ज आ जाएगा ना अंदर, क्या नहीं? थोड़ा जूम करके बताऊं। ये स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज पूरा भरा है, इससे अंदर है अभी। अब मैं इसके अंदर एक गॉसियन स्फीयर बना दूं तो इतना चार्ज ले लेगा ना अंदर से वो। अब चार्ज एनक्लोज जीरो हुआ क्या गॉसियन का? नो। नहीं हुआ। No. तो नाउ यू कैन नॉट से इट इज जीरो। तो मैं अब क्या बोलूंगा? बाय गॉसियस थ्योरम, ध्यान से देखो, गॉसियस थ्योरम से चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हाट विल बी चार्ज इनसाइड? रो अपॉन वॉल्यूम। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कितना है इसका वॉल्यूम? चार्ज अपॉन वॉल्यूम इस रो। तो चार्ज कितना हो गया? रो इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में 4/3 स्मॉल आर क्यूब लूंगा, क्योंकि स्मॉल आर के अंदर है ना ये चार्ज जो अपना रिक्वायरमेंट है। नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके। अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों साइड से 4 पाई कैंसल कर दो आप।
आर स्क्वायर का ये एक आर कैंसल, तो ई क्या मिला मुझे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ई इज, बहुत ध्यान से देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया, नॉट इनवर्स। ओके, हेलो, फिर से एक बार पूरा समझाओ, देख लो पूरा पूरा स्टार्ट से फिर से एक बार। सिंस वी गॉट ई एज रो आर क्यूब, तो मैं रो को कन्वर्ट कर देता हूं, it is charge upon volume 4 by 3 pi r cube into r cube upon 3 epsilon naught small r square. Pi, sorry, 3 I can cancel, pi is there, r cube I can cancel, so E becomes q upon 4 pi epsilon r square. This is same as intensity at any point near charged sphere. So this is for non-conducting sphere. Case 2, if point lies on surface, then small r becomes capital R. So E will be q upon 4 pi epsilon naught square capital R square. Case 3 I said very important, point lies inside. So small r is less than r. That means here this is sphere containing charge inside. This has radius capital R. I am drawing Gaussian sphere whose radius is small r and small r is capital R से छोटा, तो इसके अंदर का चार्ज लेना पड़ेगा. So by Gauss's theorem, charge inside upon epsilon naught is integral of E bar dot ds bar over closed surface. So this is rho into 4 by 3 r cube upon epsilon naught. This is E into area 4 pi r square. 4 pi we can cancel, r square क्यूब के साथ कैंसल, तो E आ गया रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. बहुत मस्त फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है वेर E एंड R आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी समझ गया इधर तक आपको? Yes. जब तक इनसाइड था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, सॉरी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लेकिन इनसाइड क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है, एनी डाउट फॉर नॉन कंडक्टिंग वाला? कुछ बोल ही नहीं रहे आप, No, No. sir. कॉपी करते फिर ग्राफ बनाता हूँ. ये 12th के सिलेबस में नहीं था, एनसीईआरटी का पार्ट है, एंट्रेंस में है. जब तक आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे शायद याद नहीं रहेगा फॉर्मूला. Done, sir. ओके, प्लीज वीडियो ऑफ कर दो जिसका भी चालू है वीडियो. सर इसका भी सेम आएगा ना उसकी तरह, आउटसाइड चार्ज आउटसाइड का तो किया ना मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा ना ये भी. वही लिखा है ना, पॉइंट आउटसाइड तो वही था फर्स्ट वाला. देखो यही है ना फर्स्ट वाला, 1/4 पाई क्यू बाय आर, तो वही है. थर्ड में भी वही बनेगा ना सर फॉर्मूला? थर्ड में कैसे वही बनेगा, देखो बताता हूँ, पहले इतना लिखो फिर बताता हूँ. थर्ड का ही बता देता हूँ, क्यू में चाहिए आपको ना, समझ गया मैं क्या चाहिए. सबका इतना लिख के हो गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0. हाँ, अब इसको मैं क्यू में कन्वर्ट करता हूँ, तो ई हो गया अपना रो, रो का मतलब चार्ज क्यू,
अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आएगा ना ये, इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आएगा ना। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपको ई मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ओके, हेलो हेलो, Yes, sir. स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर है ना ये। अब इसका ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी का। टिल पॉइंट इज इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ग्रेविटेशन में भी यही होता है, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ हो गया अपना। ड्रॉ। हो गया, रब कर दो। Yes, sir. तो हमारा हो गया इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। अब सिलेंडर का करता हूं। इंटेंसिटी at any point near charged cylinder. Consider a cylinder AB to be charged uniformly with positive charge having linear charge density lambda. Linear charge density lambda. Linear charge density means charge upon length और small charge upon small length, एक ही बात होता है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ या स्मॉल एलिमेंटल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ लिया तो मीनिंग सेम, क्योंकि रेशियो सेम आता है। लेट P बी अ पॉइंट at a distance r from the axis of charged cylinder. Draw a Gaussian cylinder CD coaxial with AB, मतलब same axis, height L, radius R. It will pass through point P. Will it pass through point P? है ना? Yes, sir. Intensity at point P will be directed normally outward. तो इधर का एक एलिमेंटल एरिया ds वो भी नॉर्मली आउटवर्ड। डायग्राम तक आपको समझ में आया है सबको? डायग्राम तक समझा? ये सिलेंडर और ये गॉसियन सिलेंडर बना है, ठीक है। तो इतना चार्ज एनक्लोज करेगा ना गॉसियन सिलेंडर, इधर इधर वाला, इसके वाला, इतना। सबको समझा डायग्राम? Yes, sir. खाली डायग्राम बनाओ, फिर मैं कंसीडर करके एक्सप्लेन करता हूं फिर से। दिस इज सिलेंडर, डोंट पैनिक। सिलेंडर ये पूरे को चार्ज दिया है और इधर गॉसियन सिलेंडर बनाया। अब इसके अंदर जो भी चार्ज इनसाइड होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन करूंगा, फ्लक्स आएगा। फिर फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला के साथ इक्वेट करूंगा, इंटेंसिटी आएगा। ड्रॉ डायग्राम, इफ डन देन प्लीज टेल मी।
None, sir. Okay. Now, by Cauchy's theorem, flux means charge inside upon epsilon naught, which is E bar dot ds bar over closed surface. Charge inside this Gaussian sphere is nothing but lambda means charge per unit length. So total charge on this will be lambda into that length L. So lambda L is charge inside upon epsilon naught equals to EDS का integration. Lambda is charge upon length, therefore charge की जगह पे lambda into L, which is enclosed by cylinder, Gaussian cylinder of length L. Therefore, we get lambda L upon epsilon naught equals to E into area of Gaussian surface 2 pi RL. L cancel. E equals to lambda upon 2 pi R epsilon naught. So this is expression for intensity at any point near charge cylinder. Copy. Intensity at any point near charge cylinder is lambda upon 2 pi r epsilon naught. Lambda का मतलब charge upon length. खाली difficult था if the sphere is non-conducting, inside is rho r upon 3 epsilon 0. वो difficult है. एक ही दो बार यूज होगा इसलिए difficult है, याद नहीं रहता. Done, sir. Okay, so point is outside, intensity is lambda upon 2 pi r epsilon. Case 2, point on surface. Then small r will become capital R, E will become lambda upon 2 pi r, that is capital R epsilon naught. Case 3, if point is inside, then small r is less than r, so charge enclosed is 0, therefore E is 0. From this you get idea, graph of E versus R till small r equals to radius, there is no intensity. As soon as it comes on the surface, we get E as lambda upon 2 pi capital R epsilon naught, which is maximum, and then inversely proportional to R. Second point, third point, graph right now.
Yes, done. Yes, sir. Intensity at any point due to non-conducting cylinder. वापस से नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट 12th में नहीं था, एचएससी बोर्ड में, एनसीईआरटी में है. सो जब भी नॉन कंडक्टिंग आया मतलब चार्ज इनसाइड होगा, नॉट ऑन द सरफेस. सो इफ आई कंसीडर अ सिलेंडर of radius r, then charge is inside. This is for non-conducting. So again we'll say let rho be charge per unit volume of cylinder of radius capital R. Length you can take capital L. So volume will become pi r 2 pi r into pi r square into L. First case, point lies inside. इनसाइड वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाकी दोनों का सेम फॉर्मूला आता है, इसलिए मैंने पहले ये ले लिया. अभी r is less than r. In this case, if point is inside, तो गॉसियन सिलेंडर अंदर आएगा क्या बाहर आएगा? अंदर। अंदर आ जाएगा. ये गॉसियन सिलेंडर, ये गॉसियन सिलेंडर बना दिया. सपोज इसका लेंथ है l, रेडियस है r. तो जो इसके अंदर चार्ज है वो रो इंटू वो इसका वॉल्यूम. पहले आप इतना बना लो फिर समझाता हूं. Completed? Diagram part completed? Can I rub the diagram? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी ध्यान से देखो, charge inside of Gaussian cylinder is rho into volume of that cylinder is pi r square small l, and E is normally outward. तो elemental area को वो parallel हो गया, इसलिए E ds cos 0 आ जाएगा. तो ये बन गया E into the area ds is curved surface area which is 2 pi rl. So L cancel, pi cancel, 1 r cancel, E becomes rho r upon 2 epsilon naught, और ये स्फीयर के लिए 3 epsilon naught था. That means again E is inversely directly proportional to r. So whenever point is inside non-conducting sphere or cylinder, E and R are directly proportional. तो इसका ग्राफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाद में फिर इनवर्स हो जाएगा. ऐसे सॉल्व. राइट फुल.
outside and on the surface, formula is same. Only if it is inside, then it gets changed. कंडक्टिंग होता है तो 0, नॉन कंडक्टिंग होगा तो वैल्यू आएगा रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर स्फीयर है तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया. अब कोई भी शेप का कंडक्टर चाहिए और प्लेन शीट, ये 4 फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर. एंड देन पॉइंट चार्ज, देन डाइपोल. Done? Shall I clear now? Again pull. Yes. Next, write electric field due to plane sheet of charge. प्लेन शीट मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट होता है वो, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट शीट से बहुत नजदीक होता है. तो ये डिस्टेंस एरिया इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट चार्ज. Consider infinite plane sheet to be charged uniformly with positive charge having surface charge density sigma. So here we have surface charge density sigma. P and Q are 2 points near the sheet on right and left side respectively. Draw a Gaussian cylinder having cross-sectional area. This area is very small. We can take cross-sectional area A such that P and Q lies on the outer surfaces, on the plane of outer surfaces. Now intensity इधर से भी outward होएगा, intensity यहाँ से भी outward होगा. डायग्राम तक समझ में आया? फिर से डायग्राम समझा है सबको? Yes, sir. अभी देखिए Yes, यहाँ sir. से भी निकलेगा फ्लक्स, यहाँ से भी निकलेगा फ्लक्स, है ना? So I can say for plane sheet, total flux will be charged inside upon epsilon naught, which is equals to flux through first surface. अगर इसको मैं first बोलूं तो ये सिलेंडर का second surface, ये वाला part, और ये outside वाला third part. Flux outside is E into area ds का close surface. इधर से इंटेंसिटी बाहर ऐसे नहीं आएगा बिकॉज एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल 90, तो ये 0 हो जाएगा. प्लस लास्ट वाले पे भी आएगा ई एरिया ds इंटू कॉस 0, इसका भी हो गया कॉस 0, इधर कॉस 90. देखो ये सिलेंडर है, इधर से आएगा इंटेंसिटी, इधर से आएगा, इधर से नहीं आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल 90 है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा ना. नहीं समझ में आया? ये सिलेंडर इधर से फ्लक्स नहीं आ सकता है क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल 90 हुआ ना. फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड ए मतलब एरिया वेक्टर, सरफेस को परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 0,
तो खाली फ्लक्स आएगा ये प्लेन सरफेस से, आउटर प्लस आउटर एंड आउटर लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, Yes, sir. बाउंसर क्या लगता है आप लोग का, फिर से देख लो। ये प्लेन शीट है बराबर, इसके ऊपर हमने चार्ज दिया है यूनिफॉर्मली विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस, और चार्ज को हमने नाम दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। अभी पॉइंट इधर भी हो सकता है, पॉइंट ये दूसरे एंड पे भी हो सकता है, तो मैं इसको P को गॉसियन सरफेस के साथ ले लूं। तो क्या किया, एक सिलेंडर एज्यूम किया सच दैट P और Q उसके प्लेन सरफेस पे है, सिलेंडर का एरिया A लिया, तो इधर छोटा सा एलिमेंटल एरिया लूंगा तो ये डी ए बार ऐसा रेडियली आउटवर्ड आएगा, ई भी वैसे ही है। अभी फ्लक्स इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, लेकिन सेकंड वाले से नहीं आएगा। ये बात समझा आपको? सेकंड वाले से क्यों नहीं आएगा? परपेंडिकुलर है ना। हाँ, क्योंकि उसका एरिया फील्ड को परपेंडिकुलर है। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो खाली फर्स्ट से आएगा, सेकंड से जीरो हो जाएगा, थर्ड से आएगा। इसका मतलब चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन है, और इसका मतलब होता है ई डी एस कॉस जीरो। डीएस को आप चाहिए तो डीए लिख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, वही तो एरिया है। ये जीरो और ये भी आ गया ई एलिमेंटल एरिया कॉस जीरो। चार्ज इनसाइड कितना है इसके, सिग्मा इनटू एरिया होगा ना, बिकॉज सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो इसका एरिया ए, तो इसने चार्ज कितना कवर किया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई टोटल एरिया ए प्लस ई टोटल एरिया ए। So sigma A upon epsilon naught is 2 EA. Therefore, E equals to sigma upon 2 epsilon naught. So intensity at any point near plane charge sheet is given by sigma upon 2 epsilon naught. Okay? हेलो, यस सर। ये डायग्राम बना के पूरा लिख लो, फिर मैं बाजू में पूरा स्टार्ट से एंड तक का फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, अगर फॉर्मूला नहीं बाय हार्ट हो रहा है तो फिर से एक बार थ्योरी देख लेना, लेकिन ईयर एंड तक खाली फॉर्मूला हमको चाहिए क्योंकि हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे डन सर। done okay, everybody has done, shall I rub it? यस। So we got sphere, we got cylinder, we got plane sheet। एक और लिखाता हूं, derive expression
for intensity at any point near charged conductor. When I say charged conductor, कोई भी shape वाले का conductor का बात करें. So consider a conductor of any shape to be charged uniformly with positive charge having surface charge density sigma. Let P and Q be 2 points near the conductor outside and inside respectively. Let ds be the elemental area of the conductor. Draw a Gaussian cylinder having cross-sectional area ds such that P and Q lies on outer and inner plane surfaces. Intensity at point P is directed normally outwards. Intensity from कर्व्ड सरफेस फिर से जीरो हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर फील्ड को परपेंडिकुलर होगा. फ्रॉम कर्व्ड सरफेस विल बी जीरो सिंस Q lies inside, therefore intensity at any point Q inside will be zero. Therefore E into area ds of outer plane equals to sigma ds upon epsilon naught will be our intensity. See, E ds means flux. ये पूरे एरिया को ds लिया मैंने. Sigma into area is charge enclosed by this Gaussian cylinder. ds cancel. E equal to sigma upon epsilon is intensity at any point near charge conductor. प्लेन शीट था तो 2 आया, चार्ज कंडक्टर है तो ओनली एप्सिलॉन 0 आया. ये भी लिख लो. अभी इसके ऊपर से मैकेनिकल फोर्स एंड एनर्जी डेंसिटी याद करना है.
हाँ सर। अच्छा अब मैं सर मैं एक आधे घंटे में आपको कॉल करूँ फिर से, ये नंबर पे मैं आपको एक 15-20 मिनट में कॉल करूँ? ठीक। यस डन। Yes, sir. ओके, आराम से, टेंशन मत लो आप लोग, क्योंकि एक बार कैपेसिटर चालू हुआ ना तो इजी हो जाएगा थोड़ा और। एक ही फॉर्मूला है इसमें बहुत फॉर्मूला है। नाउ derive expression for mechanical force acting per unit area near mechanical force per acting per unit area on charged conductor. On charged conductor. See, whenever word conductor comes, it is any shape. So again, same history. Consider conductor of any shape to be charged uniformly with positive charge having surface charge density sigma. Let S1 be a surface of elemental area ds and S2 be the remaining portion of conductor. Thus S1 and S2 can be considered as two conductor. S1 एक कंडक्टर हो गया, S2 दूसरा। तो दो चार्ज के बीच में हमेशा फोर्स रहता है। अगर ये एक सरफेस लिया मैंने जिसके ऊपर कुछ तो चार्ज है, ये दूसरा सरफेस है कुछ तो चार्ज है, तो दो चार्ज के बीच में क्या रहने वाला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो रिपल्शन। हेलो, Yes, sir. इंटेंसिटी अगर Q1 का चाहिए तो मुझे फोर्स किसको देना होता है? Q2 के नहीं? Yes, sir. सिमिलरली अगर मुझे इंटेंसिटी Q2 का चाहिए तो फोर्स में किसको दूं? Q1 को या नहीं? Q1. तो मुझे अगर फोर्स निकालना है तो मैं इंटेंसिटी किसी एक का भी निकालूंगा, फर्स्ट का भी चलेगा, सेकंड का भी चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई ऑपोजिट चार्ज से करूंगा। मतलब अगर मेरे पास S1 का इंटेंसिटी है तो मैं S2 के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और S2 का इंटेंसिटी है तो S1 के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात समझे आपको? Yes, yes, sir. So consider conductor of any shape to be charged uniformly with positive charge having surface charge density sigma. Let S1 be a surface of elemental area ds, S2 be the remaining portion of conductor. Thus conductor can be considered to be made up of two part S1 and S2. अभी S1 का इंटेंसिटी है तो S2 के चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स आएगा। अगर S2 का इंटेंसिटी है तो S1 का चार्ज, किसका एरिया मालूम है आपको? S1 का क्या S2 का? S1. S1 का, बराबर, S1 का एरिया ds है ना, S2 का तो मालूम नहीं है। So I will try to find intensity E2 due to charge on S2 and multiply with charge on S1, मुझे फोर्स मिल जाएगा। ध्यान से देखो, let P and Q be 2 points near the conductor outside and inside. अब ये पार्ट को मैं कट करके आपको यहाँ पे सेपरेटली दिखाता हूँ। ऐसे ये S1 है जिसके ऊपर चार्ज है, जिसका एरिया ds है, P राइट साइड में है, Q लेफ्ट साइड पे। What is intensity due to positive charge? आउटवर्ड क्या इनवर्ड? Outward. तो ये S1 का वजह से इंटेंसिटी E1 आउटवर्ड मिलेगा, ऐसा E1 को E1 दोनों साइड पे बराबर ना? ओके। Yes. ये दूसरा सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज है ऐसा, इसका इंटेंसिटी तो ऐसा आउटवर्ड होएगा। तो P के लिए भी आउटवर्ड राइट, Q के लिए भी आउटवर्ड राइट, तो ऐसा E2 दोनों को मिल गया क्या नहीं? Intensity Yes. due to charge on S1 is E1, which is outward as shown. E2 is as shown. अब आप ध्यान से देखो, E2 का इंटेंसिटी
दो है, P पे दो इंटेंसिटी है, E1 E2 सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट है? Same. सेम Same. मींस यू विल ऐड और यू विल सब्ट्रैक्ट? Add. ऐड। और Q पे इंटेंसिटी ऑपोजिट है ना, Subtract. तो Subtract. सब्ट्रैक्ट। हाँ बराबर। अभी देखो ध्यान से, इंटेंसिटी at P comma E we will add because they are in same direction. Intensity at Q E dash I will write E2 minus E1 माइनस Q की ऑपोजिट है, E2 पहला लिखा बिकॉज H2 के ऊपर ज्यादा चार्ज है, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इंटेंसिटी देगा। लेकिन Q है किधर, आउटसाइड का इनसाइड? In. इनसाइड तो इंटेंसिटी जीरो होता है ना, Yes. but Q lies inside, therefore intensity E dash will be zero, मतलब E2 minus E1 होगा जीरो, so E2 हो जाएगा E1। तो अभी जिधर भी मुझे E1 दिखता है मैं वहां पे E2 डालू तो चलेगा ना, क्योंकि दोनों Yes. इक्वल है। Yes. Sir. So from 1 E will become E2 plus E2। आप बोलोगे सर E2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे H1 का चार्ज मालूम है, H2 का चार्ज नहीं मालूम है, तो H2 का इंटेंसिटी निकालूंगा और H1 के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा। E आया 2 टाइम्स E2 और नॉट, Yes. Yes. लेकिन Sir. E is intensity at point P which is near charge conductor, जिसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी प्रूव किया, is intensity near charge conductor which is sigma upon epsilon, got it? So E2 मिल गया मुझे हाफ ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इधर तक सबको समझा वापस? Yes. Yes. अभी Sir. अभी मैं खाली क्या करूंगा, S1 के चार्ज से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे फोर्स मिलेगा। प्लीज कॉपी इतना। The common group में I will put all students are requested to write their daily timetable from Monday to Sunday of any subject you have, so that I can plan extra lecture, because I require at least 10 extra lecture. After E2, I have written here, we know that force is E2 into charge on S1. So half sigma upon epsilon into sigma ds. So force upon area is half sigma square upon epsilon आ गया।
Well, sir. Okay, everybody is done? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा 3 लाइन और लिखा था फिर स्टॉप करता हूँ, और बीच में आपको ए वीक में एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा सो दैट कंटिन्यूटी इज देयर फॉर दिस चैप्टर. बट प्लीज राइट एंड सबमिट डे वाइज. मंडे विच लेक्चर, व्हाट टाइम यू आर नॉट फ्री, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक लिख के रख देना. ओके, नोट. What is force upon area also called as? Pressure, na? Pressure. Pressure. Pressure, yes. So force per unit area, sometimes they can also ask mechanical pressure, is also called as mechanical pressure. तो सब कुछ दिया रहेगा, बोलेंगे फाइंड मैकेनिकल प्रेशर ऑन द कंडक्टर, तो याद रखना ये फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया. नाउ फोर्स अपॉन एरिया we got half of sigma square upon epsilon. If I multiply by epsilon naught divide by epsilon naught, तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हेलो हेलो. Yes, sir. So this will be sigma upon epsilon the whole square, that is nothing but half epsilon. Sigma upon epsilon means intensity near charged conductor. तो दो फॉर्मूला है मॉडिफाइड फॉर्म, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन और हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर. सी मेनी स्टूडेंट दे ओमिट दिस फॉर्मूला, एग्जाम में इजी आ जाता है, अटक जाते हैं, तो एक भी चीज छोड़ना मत, वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट, पेपर विल बी वेरी स्मूथ राइट दिस टाइम अगेन. राइट. Force per unit area is also called as mechanical pressure. Then it can be also written as that formula half epsilon naught E square. Completed writing? Yes. Yes, sir. Okay. Please study this. Prepare well. Next class I will ask you